Good morning, all. Welcome, welcome. Uh, Hope everyone is fine. The last class we have discussed regarding the current places in news. Good morning, everyone. Good morning. Jai Jagannath, Jai Jagannath. Okay. So last class re jodi hum dekhba ki international places super we have discussed. Now today we'll discuss the places for national importance. Right? Good morning. Good morning. Good morning. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଉ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛ that's really very nice. Good morning. Good morning. Am I audible? Is it clear to everyone? Let me know. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Good morning. Is it clear to everyone? Let me know. Sound is okay, everyone? All clear. Thank you. Thank you. Thank you so much. So national places importance यदि हम देखिबा कि current affairs रे there is जो भी आसे it's a very varied questions. For example, we can say the places from ecological importance, wildlife sanctuary हो कि national park हो. Regarding Supreme Court verdict on regarding making status, आज का date रे बहुत सारा यदि हम देखिबा not only the wildlife sanctuaries, also in the cultural part also our judiciary has a very crucial role in giving the landmark judgment to safeguard our ecosystem. Apart from that, the India bilateral relationships with its neighboring countries, how India is struggling from last more than a near about a century, that also we'll also discuss. So varied part as you discuss and even if stay with me, समस्त pen and paper नहीं कि बस because and by heart learn करो so that it will be easier for you. वन बाय वन हमें करिबे केवल नो जो प्लेसेस खाली इंपोर्टेंस तापरे पूरा डिटेल ऊपर हमें जानिबा सो दैट क्वेश्चंस जो ट्रेंड रे आछी जदी हमें देखिबा कि क्वेश्चंस ट्रेंड जदी देखिबा सिविल वर्तमान जो प्रीलिम्स रो ट्रेंड चेंज हेछि से माने मल्टीवेरियस पकु माने गोटी टॉपिक ऊपर जदी सब्जेक्ट न्यूज़ अछि तारा मल्टी डायमेंशनल से माने पकोचंती. ओके, सो इन दैट वे वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स, राइट? सो लेट अस मूव. फर्स्ट हमें देखिबा we'll discuss the Umiam Lake, right? This is the Umiam Lake. Umiam Lake, जदि हमें देखिबो कि it was in news, it was in Meghalaya. Umiam Lake कोठी, it was in Meghalaya. कहीं केटे importance थिला? Why it was in news? Umiam Lake. Umiam Lake जदि हम देखिबा recently जदि देखिबा कि recently there was an intense protest by the environmental by the local people groups, right? Intense जदि हम देखिबा it's an local groups. Both the Meghalaya government has decided to exclude the this Lampudeng Island, but actually Umiam Lake जदि देखिबो तमे Umiam Lake रे. Okay, this is your Umiam Lake, right? Umiam Lake. तो एठी कोन हेतला रिसेंट रे जदि देखिबो कि किछि ई जो गोटे लैंड ता या भितरे जदि देखिबो कि इट वाज बेसिकली एन आर्टिफिशियल लेक. जदि देखिबो इट इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल लेक. फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज एन आर्टिफिशियल लेक. Also आर इंपोर्टेंस जदि कोन इकोलॉजिकल कि एई जगह रे वर्तमान मेघालय गवर्नमेंट कोन कला हैज डिसाइडेड टू एक्सक्लूड द लंपुडेंग आइलैंड जोटा अछि सेठी that situated in the man made Umiam Lake from proposed by the luxury resort project बनिया पे. एठी कोन हबो कि जेहेतु एटा इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस आउ लग्जरी इकोलॉजिकल जदि हम देखिबा कि गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल. जदि एठी देखिबा कि लग्जरी होटल प्रोजेक्ट में ए जिनसरा कोन करले कि सेठी स्टे ऑर्डर लगा हला. ओके, to so that it has an massive harm to the ecological space. कोन देखिबा इकोलॉजिकली also popularly जदि देखिबा कि बारपानी एटा को कहा जाय उमियम लेक जोटा मेघालय रे छ बारपानी also and a scenic reservoir about जोटा कि शिलोंग रो 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर north of the Shillong in Meghalaya रे. Okay, Shillong is the capital of Meghalaya, right? So what happens, a man-made lake formed in the early 1960s by Umiam River under the Umiam Intro Hydroelectric Project. माने देखो एठी कोन अछि तमु जदि केतळे क्वेश्चन जदि भी आसे कि Umiam Hydroelectric Project HEP Umiam HEP केबे फॉर्मेशन हेतला गोटे क्वेश्चन मु कहि देबी हसरे हला लिखिला बेले डिस्कस कला बेले भी खाता पेन जोटा कहूची मु हाइलाइट भी करनबो. Umiam Hydroelectric HEP केबे हेतला 1960 मसर हेतला. इट वाज एन artificial, it is not a natural. Question केमति पकेबो, it's a natural reservoir? No, it's a man made artificial. केबे हेतला 1960s रे.
right? Developed by the Assam State Electricity Board hydroelectric power generations. Of course, because Meghalaya is always blessed with a heavy massive rainfall, so that is what sei jagar jodi ame dekhiba Umiam Lake re ei jo luxury hotel project pai gote protest heitla, and it was in very current news jodi ame dekhiba ki hela last month ra eta surrounded by the east koti achi put jodi ame physiographic part re jiwa eta the current part hela, right? This is current part, this is your detailed history background, right? This is your background. Au jodi ame physiography part jiwa, physiographic part re kon ame dekhiba कि it is surrounded by the Khasi hills. कौन अच्छी गारो खासी जयंतिया अच्छी गारो खासी जयंतिया, so middle rate अच्छी जब तक question पचार it is by surrounded by the Jaintia hills, no it's Khasi hills है along the Guwahati Shillong route and now a major for water sports and tourism. तो दी जगह टा देखियो tourism पाई ही बहुत important and also sports water. So this is all about the Umiam Lake in Meghalaya. आर की पॉइंट में तुमको कहले कि इट इज उमियम वाटर पावर जो एचईपी अच्छी 1960 रे बना होइतला एंड आल्सो इट इज खासी हिल्स. करेंटली वर्तमान लोकल माने प्रोटेस्ट करले जोटा कि मेघालय गवर्नमेंट स्टे ऑर्डर दे देला बिकॉज ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस लोकल रिज जो होटल रिजोर्ट पाई लोकल रिजोर्ट पाई. सो दिस इज द ऑल डिटेल ऑफ द उमियम प्रोजेक्ट. नेक्स्ट हमें जीवा उमियम लेक ऊपर. नेक्स्ट कम टू द लिपुलेख पास, right? Next come to the Lipulekh Pass. So basically mountain passes jodi hame dekhiyo, mountain passes do have significance in ancient trade route jodi system dekhiyo. Pass mane kon mountain pass, these are the mountain passes, they are the trade routes basically. Okay, trade routes jodi hame if we discuss jodi hame trade routes bisar dekhiba ki hala tale emankara just 1 second just hold on. Now it's okay, right? Camera now it's okay na. Good morning radhe radhe, good morning. So वर्तमान देखिबा लिपुलेख पास ऊपर. लिपुलेख जदि तमे देखिबा लिपुलेख पास इज इन उत्तराखंड हैला. लिपुलेख पास टा कोठी अछि, इट इज इन दिस एटी देखो लिपुलेख पास इज इन उत्तराखंड. this is your Almora माने उत्तराखंड, this is your उत्तराखंड, right? Uttarakhand rate achi. And Lipulekh Pass is basically a pass that is joining to the Koti Koti achi. It is a tri-junction of your Tibet, Nepal and Uttarakhand. ए जगह तमे देखु. This is Lipulekh Pass. बर्तमान जानिबा कोन बहुत important है ऊपर कोन हेतला. This is a border trade between India and China through the Lipulekh Pass. Okay, Lipulekh Pass through कोन there is a border between trade हेतला in between India and China. China माने तिब्बत कथा हम कहूँ because the Uttarakhand जो adjacent है कि अच्छे नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल को that is your Tibet part of China, and we know that Tibet is an disputed region, right? So pass in the Uttarakhand's Pithoragarh district set to resume. Uttarakhand रा को जगह रही है questions Pithoragarh district Uttarakhand रा, right? Set to resume in June 26. वर्तमान कौन है ना गवर्नमेंट अनाउंस कला कि जून मास 2026 रे एटा ए जो पास टा खुली जो फॉर द ट्रेड रूट पर्पस का भितरे इंडिया और चाइना भितरे. इट वाज रिमेनिंग क्लोज. कोन हबो एक्चुअली जदी तमे देखियो 6 मास एटा बंद रहे, 6 months because of the severe winter it is closed. Again पुनी reopen हुए when the spring appears, right? So June 26 after a 6-year hiatus ए जो वर्तमान जो ए जो जिनसटा हेइतिला पासेस गुडा जनरली क्लोज रहे, बट एठी कोन हला नॉर्मली तुम कहली 6 मास बंद रहे, बट ए केस रे कोन लिपुलेख केस जेहेतु इंडिया संगे डिस्प्यूट हमर अछि इंडिया चाइना संगे. ओके, सो ए पार्ट रे कोन 6 year क्लोज हेतला. वर्तमान ए जो जून मास रे खुली 6 वर्ष पर खुलिवो, राइट? द ट्रेड व्हिच वाज halted 2019-20 ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक पे एटा बंद थिला एंड सब्सिक्वेंट बॉर्डर टेंशंस. ओके, बॉर्डर टेंशंस का भीतर इन बिटवीन इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन. सो दीटा जिनस हमें जानले कोन गोटे COVID-19 पैंडेमिक पे 2019-20 पर तापरे बंद अछि. नेक्स्ट जदि हम देखिबा इंडिया और चाइना जदि देखिबा गलवान वैली और बहुत सारा बॉर्डर टेंशन इन इंडिया और चाइना पे. सो लिपुलेख पास टा बंद हेकी पड़िथिला. ओके, नेक्स्ट फर्दर पास करबा कोन जानिबा. बेसिकली लिपुलेख पास जोटा उत्तराखंड रे इट इज एन हाई अल्टीट्यूड माउंटेन पास, बहुत ऊपर अछि हाई अल्टीट्यूड माउंटेन पास, एंड इट इज इन द कुमायून रीजन ऑफ उत्तराखंड. ए जो रीजन टा तुमे देखुछो दिस इज योर कुमायून रीजन. एटी लिखा है दिस रूट इन्वॉल्व्स 200 किलोमीटर ट्रेकिंग बेटी करा जाय. ए जो रीजन टा तुमे देखुछो एटी दिस इज पिथौरागढ़, राइट? दिस इज अल्मोरा, न्यू दिल्ली पाखरे एटी देखुछो. सो ए जो जगह टा दिस इज को रीजन आसी, दिस इज कुमायून, राइट?
तमे देखिबो कुमायून कुमायून तमे जानथिबो इंडियन आर्मी रे हमर कुमायून रेजिमेंट अछि कुमायून गढ़वाल रेजिमेंट हला दिस इज वन ऑफ द वेरी very brave soldiers here belong to this pahadi को कहा जाय कुमायून आउ गढ़वाल region हला प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस सो कुमायून हला पर्टिकुलरली हमर कहा कुआ जाय उत्तराखंड आउ नेपाल को मिसे की कुआ जाय कुमाऊन आउ गढ़वाल region राइट सो ई जगह रे हमें देखिले सी it's an Kumaon region of Uttarakhand, right? And near the tri-junction of India, Nepal, and China. So, ये जो part का तमे देखो, this is a tri-junction, Lipulekh Pass है, India, China and Nepal. So, तमे देखो जो कि गोटिए passes जोटा exactly उत्तराखंड रे अछि, but इटा तीनिटा disputed part जोटा कि other two countries जो questions हम केतला पचारला कि Lipulekh Pass is a tri-junction part and it borders and its dispute shares with two other countries. But दे देला कि इंडिया चाइना नेपाल आगोटे इंडिया चाइना भूटान सपोज तमे हठात मन पड़े भूटान मार्क कंप्लीटली रॉन्ग सो इट इज नेपाल उत्तराखंड को ऊपर पट्टा है नेपाल तल पट को जोटा रहिबो सेटा हैला सिक्किम साइड को सेटा हैला भूटान ओके सो एठी हम देखले इट्स लिंकिंग द उत्तराखंड विथ तिब्बत हैला ए जो हाईलाइट मु कर दे दिस इज योर तिब्बत बिल्कुल बिल्कुल ऑस माउंटेन पास को बीआर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करछ वेरी गुड प्रदीप वेरी गुड so an ancient basically देखो it's an ancient trade route connecting the Indian subcontinent with the Tibetan plateau so basically जदि हम देखिबा this is an ancient trade route तमे भाबनी कि एटा जो trade route ता एटा आजिकर हैला ए जो अछि it is connecting with the हैला तिब्बत this is your Tibetan China ए पार्ट this is Tibet China right so ancient trade route तम ऊपर कोन देखछो माउंट कैलाश अछि एठी की अछि मानसरोवर लेक अछि दिस इज द रीजन राइट मानसरोवर लेक अच्छा एटी आउ कोन कोन देखियो लिपुलेख विषय फर्दर हमें जानिबा एटा त हमें ज्योग्राफी जानले फिजियोग्राफी ऊपर जानले आ बायलैटरल रिलेशंस केमति हमर होइछि ता ऊपर हमें जानले वर्तमान देखिबा आउ कोन फर्दर इंफॉर्मेशन लिपुलेख वाज फर्स्ट इंडियन बॉर्डर ओपन ट्रेड विथ चाइना इन 1962 1962 मसिया रे प्रथम थर पई लिपुलेख पास तो ओपन करा जायतला एटा फॉर योर इंफॉर्मेशन हैला then followed by the Sipkhila Himachal Pradesh 1994 and Nathula तमे जे देखिबो कोठी कोठी 1992 रे 62 1992 रे प्रथम ओपन करा हेतले then your Sipkhila Pass in Himachal Pradesh ऊपर Sipkhila ऊपर छी then your Nathula Pass is in कोठी सिक्किम रे मन रख Nathula Pass in सिक्किम रे एटा ओपन करा हेतला राइट Nathula केबे हेतला it was in 2006 रे This mountain pass situated in the Bass Valley. I would information को जगह रे को वैली रे Bass Valley रे एटा अछि. This is in the Bass Valley of the Pithoragarh district. Bass Valley रे holds immense importance for your part of the Kailash Mansarovar yatra. हमर जो हिंदू पिलग्रिमेज अछि Kailash Mansarovar यात्रा जोटा हुए ए लिपुलेख पास देई की से माने जान मन रखो लिपुलेख ओल्ड लिपुलेख पास गोटे अछि से पास देकी से माने कैलाश हला मानसरोवर यात्रा हला जोडी भगवान शिव शंभु बसचंती हला सेठी हम जानि सो दिस इज अ वेरी important part so हमें कोन जानले ऊपर not only the physiographic part the Lipulekh Pass is placed in the greater Himalaya ranges in the Pithoragarh district of Uttarakhand also it's sharing the common border with jodi dekhibo it is connecting with the Tibet and Nepal also and also it's a disputed part 1962 मसिया रे इंडिया चाइना वॉर पर एटा ओपन करा हेतला वर्तमान 6 वर्ष हला बंद थिला बिकॉज़ ऑफ द कोविड पैंडेमिक एंड द ऑनगोइंग dispute with the China right now it going to open and again this trade route in June 2026 okay next further hame proceed करबे लिपुलेख पास पर तुगलकाबाद फोर्ट तमे देखुछो कि मते एनी गेस वेयर इज तुगलकाबाद फोर्ट एनीवन कैन से वेयर इज तुगलकाबाद फोर्ट मते को बाबा जेमती क्लास रे पढुछो सेही आंसर तमे आंसर दियो तुगलकाबाद फोर्ट ता कोडी डिटेल विल डिस्कस कोड तमे जानुछो anyone heard of this Tughlakabad Fort where it is Tughlakabad Fort anyone can say where is Tughlakabad Fort New Delhi very good Tughlakabad Fort is basically in New Delhi जो तुम देखो it is South Delhi it's not in North Delhi it is in South Delhi South Delhi तमे देखो Tughlakabad is what is there okay thank you so Tughlakabad Fort recently Supreme Court has given verdict regarding what to
archaeological तमे देखो काहा को कहितला सुप्रीम कोर्ट has given an question the ASI archaeological survey of India regarding its its sincerity. Let us know, it's very interesting. Tughlakabad Fort जदि हम देखिबा, this is in the Delhi High Court, हैला Delhi High Court, also Supreme Court is also there, but Delhi High Court रे वर्तमान केस वर्तमान जो verdict there Delhi High Court रे criticize the archaeological survey of India माने कि ASI, I am talking about the ASI for delays in conducting court order survey, delays in conducting court order survey of encroachments at Tughlakabad Forts. ना Tughlakabad Forts रे जोटा encroachment अछि ताकू नै कि काहे कि समान देखु जंदी बहुत जगह लोक माडी बसणी घर करिया पे माने आई मीन दिस इज द प्लेस एरिया राइट, दिस इज एन यूनेस्को हेरिटेज पार्ट को डिक्लेयर करा है बट वर्तमान कोन छि जेहेतु दिल्ली रे पॉपुलेशन बूम हे वर्तमान जितेटा भी मेट्रो अछि सबुट हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन न्यू दिल्ली, मोर इट इज unofficially कहउछन कि it surpasses near about 3 crores population, right? Officially samane 2.3 कहउछन but it's not 2.3, it's near about 3 crore upur. Good morning Soumya, Sumit, good morning. I'm good, thank you so much, thank you. Right, so agu ko dekhiba, so this fort is situated in the southern part of the New Delhi. It's built strategically along the rocky counters of the Aravalli Hills ro rocky counter रे कराई छै काहे कि मंगोल मानक सेतबे जो मोगल्स माने बढ़ुतिले हैला तांकू केवल डर थिला खागु मंगोल मानक माने मंगोलिया रो मोगल्स माने जो माने आसुतिले राइट, तो से माने कोन करथे तार जो ग्रेनाइट पत्थर नै अरावली रो ग्रेनाइट नै कि सेठी से माने फोर्ट ता एंटायरली मेड ऑफ द अरावली काउंटर्स ऑफ द अरावली हिल्स माने तार ग्रेनाइट आ सैंडस्टोन नै कि से फोर्ट ता को बनै चंदी राइट, व्हिच इज प्रोवाइडेड द नेचुरल डिफेंसिव एलिवेशन एंड abundant granite construction. तमे जदि देखियो एठी ए जो तुगलकाबाद फोर्ट रो मैक्सिमम से माने यूज करचंदी ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन राइट, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन ऑफ कहारा अरावली हिल्स रो, इट्स दे आर यूजिंग द अरावली हिल्स रो से माने यूज करचंदी राइट मोगल्स माने इन डिफेंस फ्रॉम द मंगोल राइट. The Tughlakabad city was built by the founder of the Ghiyasuddin Tughlaq in 1321. 1321 मसीह रे Ghiyasuddin Tughlaq जो थिले one of the Mughal emperor, he was built in 1300 14th century exactly in the 1321 AD right. So this was about the Tughlakabad fort जो तुम जानला हिस्ट्री में जानले पास्ट हिस्ट्री किए बनै थिले Tughlakabad fort, where it is geographical location and why the Delhi High Court has given an questioned the archaeological survey of India regarding its insincerity on and less punctuality in dealing with the finding the encroachments and the surroundings of this Tughlakabad fort right. So next move kariba again Zojila Pass right, these are the news. Zojila Pass jodi bartaman dekho, it is currently located in Srinagar Uttarakhand hela jodi dekhi union territory dita havare Ladakh ko union territory. This is your Zojila Pass located in the Srinagar UT hela kebe bi bhul re maribani Ladakh, it's in Srinagar hela union territory. kon dekhiba current news re achi Srinagar Zojila Pass जति देखिबो, Zojila Pass recently तमे जति देखिबो किछि दिन पास तळे हला, दिस इज योर Zojila Pass तमे देखिबो ई मार्च आई थिंक लास्ट वीक नियर अबाउट 26 और 27 मार्च रे समाउ हला लास्ट वीक रे कोन हितला गोटे एवलांच आस्तिला बहुत टूरिस्ट सेत्रे कोन हितला पोती हे जाइतले दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चूनेट योर इंसिडेंट हैपेंड, बहुत टूरिस्ट देयर आल्सो समन को डेथ हे जाइतला ए जो पासेस रे Zojila Pass avalanche कोन हितला avalanche माने कोन ठीक अछि Zojila Pass रे दिस इज योर avalanche इज योर माने snowfall, basically avalanche means your snowfall हला सडन स्नोफॉल बस्ट हे कि पड़ गेल बहुत तमर पोती हे जाइतले a lots of tourist vehicles there सेठी पोती हे जाइतले. तो Zojila Pass विषय जानिबा कोन ता विषय आउरी डिटेल लेबी. A devastating snow avalanche near Zojila Pass resulted in several fatalities, injuries, sparking debate over the safety crucial in between the Kashmir Valley and Ladakh. जदि तमे देखिबो Zojila Pass उपरे हला Kashmir Valley श्रीनगर रो नेकी एटा लद्दाख ले पर्यंत एटा कनेक्शन करछि. Zojila is very जदि देखिबो Zojila Pass जदि देखिबो इट्स एन ग्रेटर हिमालय माने ट्रांस हिमालय रे बहुत बड़ पार्ट एटा गोटे माने बहुत इंपोर्टेंट माउंटेन पास एटी अछि ट्रांस हिमालय. Physiography देखिबा an avalanche is a rapid gravity driven your slide snow. Avalanche कोन एक्चुअली avalanche माने नॉर्मली जदि देखिबो कि बहुत स्पीड रे
यू नो तमरो बरफ माने स्नो गुडा सब माउंटेन रो खसंती दीटा जिंस पैरामीटर करे avalanche पई फर्स्ट थिंग इज योर ग्रेविटी सेकंड इज योर टेम्परेचर जदी टेम्परेचर जदी अधिका हे गेला हला ताले सिटी स्नोफॉल टा हबो और सेकंड हला ग्रेविटी ओके and the debris down a mountain slope it is triggered by structural instability heavy snowfall structural instability jogu bhi heavy snowfall हुए और temperature rises the occur only in the 30 to 45 degree centigrade so exam रे एटा नोट करो तमे avalanche हेबार आ गुडे सबुठु मुख्य कारण हला वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग increasing the rise of temperature जेहेतु rise करी होचे abruptly and when it reaches 30 to 45 degree snow melting हुए it कौन करे this triggers the snow melting please make a note snow melting ए जगह हुए है ना avalanche snow melting हुए that is what right Zojila Pass is a high altitude mountain pass basically देखिए जदी Zojila Pass is a high altitude mountain pass right in Union Territory of Ladakh right it is situated in the national highway NH1 and elevation of approximate 11,575 right 11,575 ठीक अछि एटी जो जोजिला पास टा एटा देखिबो एटा एक्चुअली एटी टिके मोर भूल हे छि एटी तमे एटी आकु लिखि देबो JNK जोजिला पास JNK रे एक्चुअली आछि राइट सो इट इज एन कोडी कोड छि आ भितरे नेशनल हाईवे 1 NH1 एटा अछि NH1 and elevation of approximately पाखा पाखी 11,575 feet माने ऑलमोस्ट ग्रेटर हिमालय आउ ट्रांस हिमालय पाखा पाखी से ऊपर ग्रेटर हिमालय ट्रांस हिमालय मझा मझी अछि right due to heavy snowfall and the constant threat of avalanche hela constant threat of avalanche jodi dekhiba the pass traditionally remains closed for nearly 6 months every year ei karan pai kon huye prati barsho 6 mas band rahe kebetu october ru nei ki march पर्यंत माने autumn ru nei ki आरंभ होई जाय hela jemti monsoon सरी सरी sang sang बंद होबो तापर nei ki till spring arrival पर्यंत right thus cut off Ladakh from the rest of the country road living air travel the only options so this is about the Zojila Pass हमें जानले जोटा कि कनेक्ट करछि जोजिला मन रखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जदी आसे कोडी Zojila Pass कनेक्टिंग श्रीनगर टू ले मन रखो इट इज श्रीनगर टू ले कनेक्ट करछि इट इज कनेक्टिंग जदी तमे देखिबो इट इज कनेक्टिंग श्रीनगर टू ले राइट श्रीनगर टू ले ले इज इन लद्दाख राइट फर्दर प्रोसीड करिवा next come to the Chambal sanctuary right next come to the Chambal sanctuary देखु छ एटी कोन देखु छ एटा कहार चित्र विल से कहार एटा फोटो के मते कहि परिबो कहार फोटो एटा आइस तळ को सडन खसी के लिखला प्रदीप्त ओके वेरी गुड ओके so this is the picture of your supreme court हला वर्तमान सुप्रीम कोर्ट कोन कहै छी आपरे देखिबा हमें तमे देखु छ घड़ियाल कुंभीर अछि and some mining is activities you know here happened here okay recently जदि हमें देखिबा yes very good recently जदि हमें देखिबा supreme court right has taken in so moto cognizance on to protect the fragile lotic ecosystem so then what is lotic ecosystem okay yes very good lotic ecosystem jodi dekhiba lotic ecosystem means flow of water in one direction that is called your lotic ecosystem flow of water in one direction right fresh water of the national Chambal sanctuary from rampant and well organized illegal sand mining sand mafia Chambal sanctuary jodi dekhiba it is basically a wildlife sanctuary it has got immense ecological importance bartaman kon it is in around the clutches of sand mafia sand mining it बहुत होछ तापर कोन हला सुप्रीम कोर्ट वर्तमान स्टे ऑर्डर लगै देला नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई कोन पे बिकॉज़ इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस जदि हम देखिबा घड़ियाल कुंभीर जोटा अछि घड़ियाल हला तिनि आमे जानि छनि घड़ियाल कुंभीर रो बहुत वैरायटी अछि जति घड़ियाल कुंभीर हला मगर सेही भलिया हला एमानकर जदि देखिबो घड़ियाल कुंभीर वर्ल्ड रो 90% ए जगह अछि प्लस सेठी कोन अछंती टर्टल्स भी अछंती टर्टल्स प्लस बर्ड भी अछंती सो एंटायर इकोलॉजिकल सेटअप सेठी जंगर जो नेस्टिंग होची सी जगह सेठी प्रॉब्लम होची मींस आई मीन इट गेट्स एन हैम्पर इवन इफ आल्सो द फूड चेन सिस्टम रे भी प्रॉब्लम आसीबो देखिबा आगु डिटेल रे द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी फेमस फॉर द घड़ियाल ए crocodile variety गोटे कुंभीर रो variety गोटे घड़ियाल crocodile variety is one of the India's most ecologically significant protected areas. This is about your Chambal जदि देखिबा Chambal is कोठी मध्य प्रदेश रो मन रखो Chambal
इज इन मध्य प्रदेश आउ जब देखियो खाली एबे वर्तमान ए जो जगहटा मध्य प्रदेश राजस्थान हला को आउ गुजरात रा किछि पार्ट को एटा टोटल ट्राई जंक्शन पार्ट बहुत बड़ एरियाटा चंबल आउ दिस ऑन द चंबल रिवर जानिबा वर्तमान द सैंक्चुरी इज द फर्स्ट एंड द ओनली ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड हला इज द फर्स्ट एंड द चंबल डाकू यस चंबल क्वीन किए कहियो एनीवन कैन से किए चंबल क्वीन हला गोटे अछि बैंडिट क्वीन गोटे अछि पिक्चर तमे देखि परिबो दैट्स अ ट्रू मूवी स्टोरी हला द सैंक्चुरी इज द फर्स्ट एंड द ओनली ट्राई स्टेट माने किए राजस्थान मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश गुजरात बोले कहले इट इज उत्तर प्रदेश तीनटा ट्राई जंक्शन पार्ट रे किए अछि चंबल रिवर एंड मन रख चंबल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना फॉर योर इंफॉर्मेशन चंबल रिवर जोटा अच्छी इट इज एन ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना प्लीज नोट इट है यमुना रा ट्रिब्यूटरी दिस इज एन ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर है यमुना रिवर रा एटा ट्रिब्यूटरी है मेक ए नोट ऑफ दिस द सैंक्चुरी हैज एन होम टू वर्ल्ड्स जदि देखिबो होम टू वर्ल्ड्स 90% वाइल्ड घड़ियाल पॉपुलेशन हमर जो कुंभीर अछन घड़ियाल कुंभीर 90% घड़ियाल कुंभीर इथरे अछंती एंड एंडेंजर्ड गैंजेस डॉल्फिन है एंडेंजर्ड केटी गैंजेस डॉल्फिन है माने जो गंगा रे जो डॉल्फिन जोटा कहंती जोटा कि ताको कहंती योर गैंजेस डॉल्फिन इरावती डॉल्फिन भी वर्तमान गंगा को पळे आछन गैंजेस डॉल्फिन पळे आछन राइट हमर बिकॉज ऑफ द नमामि गंगा एक्शन प्लान पे जो जोठी तमे देखियो डॉल्फिन जोठी परिष्कार पानी सेठी डॉल्फिन माने आसनी ता माने कोन निश्चित रूपे चंबल रिवर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर इन इंडिया हैला मेक ए नोट ऑफ दिस नेक्स्ट अदर की स्पीसीज आर की अछन सेठी मार्स क्रोकोडाइल जोटा कि मगर माछ हैला कुंभीर देन रेड क्राउन रूफ टर्टल स्मूथ कोटेड ऑटर एंड स्ट्रिप्ड हाइना एंड ओवर 330 varieties of bird species basically के Indian skimmers तमे देखिबो Indian skimmers also there एटी तमे देखुछो these are the famous Indian skimmer एटा तमे देखुछो these are the Indian skimmer ए bird गोड very important एमाने these birds are very important Indian skimmers they are and this is the crocodile your जदि तमे देखिबो हमर जो चंबल रे this is घड़ियाल these are the घड़ियाल मानकर एमानकर बिग अछि थंटटा बहुत बड़ घड़ियाल कुंभीर राइट मन रख ए जगह 90% सप्लाई होचे वर्ल्ड रो बहुत जगह मन रख दिस इज चंबल रो जो ए जगहटा दिस इज इन वर्ल्ड रो वेरी इंपोर्टेंट इकोलॉजिकली बिकॉज़ एटू घड़ियाल कुंभीर सप्लाई होचे सब जगह जानि बाहुरी डिटेल रे द इलीगल सैंड माइनिंग कोन करची हेबा द्वारा कोनटा प्रॉब्लम होची जदी तमरो एनवायरनमेंट रे क्वेश्चंस आसिला सपोज मेंस रे प्रीलिम्स रे तो एटा इंपोर्टेंट हमें जानली मेंस धर पढले तमे कोन जानिबो मु तुमको सब बेले कह कि कंटेंट जहा पकरे अधिक अछि जे जानिची डेफिनेटली ही इज रिच and of course it allows you to score more okay so the illegal sand mining which degraded the nesting grounds of the sand nesting species एमाने कोन करंती बेसिकली एमाने अंडा दियंती कोठी अंडा दियंती बाली भितरे किए कुंभीर भी अंडा दिए कइच भी अंडा दिए चढ़ई भी अंडा दिए तमे भाबो किते बड़ सफरिंग होची जदी सैंड माइनिंग होची सो कोन होची सैंड व्हिच डिग्रेड द नेस्टिंग ग्राउंड्स माने नेस्टिंग ग्राउंड को अफेक्ट करे जोने अंडा दियंती किए for the sand nesting species such as घड़ियाल and the certain turtles माने कुंभीर आउ तमरो कइच certain turtles and water extraction and illegal fishing even if कोन हुए जो फिशिंग भी एक्टिविटी होची इलीगल फिशिंग भी होची that also diminish both water level भी कमाई देबो and available prey eventually disturb the entire ecological setup तो इत्ते बड़ गोटे इकोलॉजिकली हार्म होची काहे ना प्रे फूड चेन जो फूड पिरामिड ता सेटा भी डिस्टर्ब होई जो जदी माछ खाइ दे तले कुंभीर खाइबो कोन right so this is the case why the Supreme Court has interfered in the Chambal wildlife sanctuary I hope it is clear to everyone now am odisha ra puri district re भी सातपड़ा famous for the इरावती delta yes very good very nice सातपड़ा भी जदी हम देखिबो हला डिस्ट्रिक्ट रो सातपड़ा जदी तमे देखिबो हला तमरो हमर जदी देखिबो कि अनुगुल रे भी अछि हमर हला टिकरपड़ा हला आउ सातपड़ा भी तमे देखिबो सेपटे पार्ट रे पूरी सेपटे पार्ट रे अछि आउ सातकोसिया भी देखिबो सब जगह रे प्राय हमर देखा होछि एटा ठीक अछि ओके आगु बढ़िबा चंबल पर नेक्स्ट टाइम आसीबा सक्सगम वैली हला मेक ए नोट ऑफ दिस सक्सगम वैली दिस इज अ वेरी वर्तमान वेरी करंट न्यूज सक्सगम वैली कोन पे एटा डिस्प्यूट हेछि हला जदी हमें देखिबा कि अगेन इंडिया और चाइना हला रिगार्डिंग डिस्प्यूट बिटवीन कोन लिखली डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया चाइना हला डिस्प्यूट बिटवीन
India versus China, right? कौन है India rejected China's infrastructure activities on the Shaksgam Valley. बहुत important एटा मन रखो Shaksgam Valley यदि देखियो जोटा कोडी again काराकोरम ऊपर को ट्रांस हिमालय ऊपर को काराकोरम रे कौन हेतिला term the projects under the China Pakistan economic corridor as as illegal and invalid. कौन है अगर एटी हमें देखले कौन CEPC China Pakistan economic corridor. Actually मु तोर बैक हिस्ट्री जदि कहबी ओके एटा गोटे लाइन खाली सार दो and asserted that the valley is inseparable part of India. Now come to this picture. जदि हमें देखिबा इकोनॉमिकली एई जो जगहटा माने जदि आई मीन जदि देखिबा जियोपॉलिटिक्स ऊपर जदि जियोपॉलिटिक्स ऊपर देखिबा ताले एई पार्टटा दिस इज सक्सेम वैली दिस इज इन द ट्रांस हिमालय रेंजेस 1962 वार रे जेतेबेले जवाहरलाल नेहरू हमर द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू has ceded this part already पाकिस्तान को दे देले तो पाकिस्तान कोन कला ताकू से जिंसटा ताकू दे देला चाइना माने माने जिंसो हमर किंतु गोटे भूल डिसीजन बाय इंडिया रो प्राइम मिनिस्टर जो भी जिंसो रे माने आई मीन टू नो फॉर द पीस यू नो प्रिवेलिंग द पीस द डिसीजन जहां भी गोटे भूल हेई छी ठीक अछि पीस पई से जिंसटा कर देती तो चाइना कोन कला ताकू दे देला काकू पाकिस्तान दे देला चाइना को सो वर्तमान चाइना कोन करछ तार जो कॉरिडोर बनौछि एई कॉरिडोर टा एक तिब्बत नु के एपट ने के सर आसी कोडू दिस इज सीपीसी कॉरिडोर मु देखली सीईपीसी कॉरिडोर हला इट इज सॉरी गोटे सेकंड ए जो कॉरिडोर टा बनेला दैट इज सीपीईसी कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ए जो कॉरिडोर टा बनेला दिस इज द कॉरिडोर दैट सक्सम वैली देखि वर्तमान इंडिया को नो दिस इज आवर्स यू कैन नॉट गिव इट सो इट कौन लिखा है कि एरिया ceded by the Pakistan to China controlled by the China this chairperson this is Gilgit Baltistan तो चाइना जेहेतु पाकिस्तान चाइना को दे देला तो वर्तमान इंडिया को जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चाइना करूची इंडिया को नो इट इज कंप्लीटली आवर्स देयर इज नथिंग इज योर्स दिस पार्ट जोटा गोटे फुल डिसीजन ऑफ कोर्स वर्तमान ए पार्ट ऑफ नेक भी यूएन रे हमर पेंडिंग हिक अछि इट्स नॉट रैटिफाइड स्टिल इट इज एन टेरिटरी पार्ट ऑफ जदि हमें हमर एटलास भी जदि हमें देखिबा है ना इंडिया रा गोटे एटा बहुत बड़ गोटे पार्ट जदि हमें देखिबा कि यू नो दिस इज नॉट गिवन बाय द मान रैटिफाइड बाय द यूएन अच्छा आगु बढ़िबा द सक्सेम वैली दैट इज ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट बिल्कुल 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 हाँ भाग्य खराब देते एक्चुअली जदि हमें देखिबा कि सही समय रे बहुत बड़ गोटे भूल डिसीजन हमरो इंडिया तरफ रे हेतल तो वर्तमान ताकू हमकु बिलियंस ऑफ रुपीस वी आर स्पेंडिंग ऑन यू नो फॉर आवर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्ट फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी फ्रॉम यू नो एनिमीज कंट्रीज लाइक योर पाकिस्तान एंड चाइना दैट इज व्हाट वी हैड टू पे गोटे मन भाबो जीवन रे गोटे रॉन्ग डिसीजन केते बड़ पे करिया हमकु पड़ला राइट सो देखियो यदि एटी कहले सक्सेम वैली which is in trans karakoram मन रखो it is not in the greater himalaya परीक्षा जदि पढिबो तमे कोन लिखिबो it is in the trans himalaya ranges रे is in high altitude sparsely populated बहुत कम it's a very less density sparse populated माने less dense we can say less density you know less density population region eastern karakoram mountain ranges it is also कोठी Eastern Karakoram mountain ranges it lies north of the Siachen glacier Siachen ro jodi dekhibo north of the Siachen glacier a part of the Hunza Gilgit region this is hela part of the Hunza this is Gilgit Baltistan man rakho Gilgit Baltistan controlled by Pakistan and you're claimed by India hela man rakho Gilgit Baltistan aita bi माने पाकिस्तान कंट्रोल करछि वर्तमान इंडिया वर्तमान ती जगह इकोनॉमी बहुत खराब से माने कहउछन यार हम लोग तुमसे निकल जाएंगे माने पाकिस्तान सेठी ना फूड सिक्योरिटी किछि दे परनी they are totally dependent on over India सेठी बाहर लोक भी सेठी इंडिया टावर यूज करछन of course धीरे धीरे we are envisaging to will back to our own lands जोटा कि भूल रे पड़ै छै समान पक्कू ओके so lastly जदि देखिबा Hunza Gilgit region the Pakistan Pak occupied Kashmir POK and the borders with China's Zhejiang province to the north China वर्तमान तार मैप रे कोन देखौछि एटा को Zhejiang province रे नै जाइछि so disgusting so unacceptable so this is all about the Shaksgam Valley which was in border dispute between the India and China is making quantity janlo tome China is making CPEC corridor China Pakistan economic corridor jota banauchi Indian government of India has rejected this saying that this is illegal construction because this is a very unitary part of the India you cannot give it you cannot construct over it so vartan it is stay order lagich okay next jiba
होप एवरीवन इज गेटिंग समस्त को भल लागुचे एवरीवन से माने आगे बिल्कुल 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 ओके समीर ओके 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 गुड सो वर्तमान देखिबा इंडिया सीचेल्स ऊपर हम देखिबा थैंक यू वेरी गुड इंडिया सीचेल्स ऊपर हम देखिबा वर्तमान राइट सीचेल्स जदि देखिबो सीचेल्स इज बेसिकली इट्स एन स्मॉल टाइनी कंट्री सीचेल्स जदि तुम देखिबो एंड सीचेल्स रो जदि हम देखिबा कि सीचेल्स अच्छी कोठी सीचेल्स हला तमरो इन द वेरी इंडियन ओशियंस अफ्रीका और इंडिया रा मझा मझी एटा अछि इंडियन ओशियंस दिस पार्ट सीचेल्स कोन हिची यार संगरे रिसेंटली इंडिया और सीचेल्स गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड okay India and Seychelles discuss the strengthen the maritime trade and blue economic cooperation है maritime trade and blue economic cooperations माने plantation of जदि हम देखियो blue economy की जाउची blue economy जदि हम देखियो it plantation of the mangroves fishing community okay so and also the coral you are promoting the coral growths it तीनटा जिंस blue economy ras fishing as an habit and activity plus growth of the coral है corals because corals are the carbons को समाने carbon sink समाने carbon टाणी नियंती आ गुडी की हैला तमरो mangrove plants so these are the कहा करिवे maritime trade भी करिवे plus your blue economic cooperation at a business roundtable in Mumbai कोठी था this was held in the Mumbai right so underscoring the Seychelles strategic role in Indian Ocean outreaching under the महासागर विजन परीक्षा तमरो कोन पचरिवे महासागर विजन कहा सागर हेतला मन रखो एग्जाम रे जदी तुम पचरबे महासागर विजन कोन महासागर विजन माने हमें कहान कोन देले इट इज द ट्रेड टॉक्स बिटवीन बायलैटरल टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड सीचेल्स हैला सीचेल्स रा कैपिटल हैला विक्टोरिया राइट सीचेल्स रा कैपिटल जदी तुम देखियो इट्स एन विक्टोरिया इज दैट सीचेल्स इज इन इंडियन ओशन दिस इज योर इंडियन ओशन राइट दिस इज आवर इंडियन ओशियंस सीचेल्स नेक्स्ट identified areas कोथरे cooperation include the blue economy आउ को देला tourism healthcare pharmaceuticals education skills development and financial services so कोन हमें जानले कि वर्तमान इंडिया और सीचेल्स गवर्नमेंट भीतर इंडियन गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ सीचेल्स दे हैव promotion not only the tourism also the education health financial services pharmaceuticals education सब skill development सब उठे now the question is that government of India can ki invest करियो के मते कहि परियो can anyone say why the government of India is more interested in such tiny islandic nation छोटो छोटो टापू वाला country India गोटे एडा बड़ सब continent why anyone can say is the ocean mineral included in the blue economy yes we can say yes we can say ocean mineral extraction of the ocean mineral also we can say extraction of the ocean mineral also it is included in the blue economy very good very nice say jinsa हम कहले corals ऊपर okay and blue economy रे हम सेटा include करि परिबो definitely there are lots of even if you know the nodules collecting the nodules sea nodules मन रखो जेति कि हमर resource terrestrial land रे अछि ताठू कई गुना ज्यादा बहुत माने I mean 10 times or 20 times ज्यादा तमरा अच्छी समुद्र भीतर ओके सो वर्तमान এই জিনিস উপরে রিসার্চ চলছে एंटायर वर्ल्ड इज ऑन द बिहाइंड द एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्टिंग द पावर ऑफ ओशियंस राइट अच्छा वर्तमान मते को इंडिया काहे केते सीचेल्स रे इंटरेस्ट दोछि एनीवन कैन से टू बी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ वेरी नाइस बहुत बढ़िया एनीवन कैन से समस्त पार्टिसिपेट कर काहे कि इंडिया रे इंटरेस्ट नी छोटिया कंट्री पई मन रखो जदी हमें देखिबा एटा गोटे ट्रेड रूट एटी जो ईस्ट एशिया जो कंट्री आसुंदी मलाका स्ट्रेट देकी एई सब नै कि एठी एपटे तमरो एठी हला तमरो कोठी तो जानले हमें हॉर्मुज स्ट्रेट एटा हला कोठी हॉर्मुज स्ट्रेट मन रखो हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ गोटे रूट ता कोपटे गला एपटे गले तमरो सुएज कैनाल दिस इज योर सुएज कैनाल बाबेल मैंडेब एठी हला तमरो के बाबेल मैंडेब so trade route जदि हमें देखिबा कि ocean trade route India is having playing a big B role or big bro role to control this maritime maritime security to control over the this oil route जदि तमे हमें देखिबा एटा हला completely oil route हला very important oil route एई पट सब जाउची entire we are connecting here Europe आ एपटे हमर जाउची west asia एई पटे
हैला को पटे जे कि ए हॉर्मुज स्ट्रेट देख बर्तन तो जानी थे हॉर्मुज स्ट्रेट देख कि वेस्ट एशिया को में तेल पई जाउछंदी प्लस यूरोप को कनेक्ट करछन सो इंडिया इशू कंट्री रे निजर नावल बेस सेटअप करियो एआर बेस सेटअप करियो हैला दैट इज व्हाट इंडिया इज मच हेल्पिंग this tiny countries like your Seychelles, Mauritius and Madagascar एठी this is Mauritius hope it is clear now next जदि देखिबा again this partnership India और Seychelles रो partnership is being advanced through the India's neighborhood हैला कोडी India's neighborhood first India's neighborhood first and ocean based cooperation approach India's neighborhood first and cooperation approach with a shared vision of peaceful and prosperous Indian Ocean region so हमें कौन जानले इंडिया जो ए जो छोटे छोटे टाइनी आइलैंड कंट्री को हेल्प करूची आकाश करे डेवलप करूची मैरीटाइम एक्टिविटी इकोनॉमिक हो एजुकेशन हो स्किल डेवलपमेंट हो हेल्थ हो फार्मास्यूटिकल्स हो एम्प्लॉयमेंट हो बिकॉज ऑफ this the purpose is that this is India has a very strategic position over the Indian Oceans आउ जो गुटे हमर ट्रेड रूट ता जाउची खास करके टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना राइट डेवलपमेंट very good very nice बाबेल मैंडेप हैला ए जो रूट ता एटा म तुमको कहली मन रखो एटा हला हॉर्मुज स्ट्रेट आ ए पार्ट ता जो एटा हला दिस इज योर बाबेल मैंडेप हैला एटा हला बाबेल मैंडेप जोटा की रहि छु कोटु यमन पाखरे मैंडेप बाबेल मैंडेप ए पार्ट ता हैला सो एटा हम जानले कि इंडिया पूरा जदि हम देखिबा इंडिया और सीचेल्स ऊपर या पछर बिहाइंड द विजन कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोन टाइम एम्बिसाइज करछे छोट छोट कंट्री मानन संगरे आइलैंड कंट्री संगरे तांगे निजर डेवलपमेंट निजर बायलैटरल रिलेशन बढ़ुची आर रीजन हला कि दिस इज एन एंटायर ट्रेड रूट वन व्हिच इज कनेक्टिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू द वेस्ट एशिया another through this Bab el Mandeb the Suez Canal देखी कोटी यूरोप को जाउची so that is the main purpose India is going to the taking the leadership role in the only Indian Oceans head of the tip of the Indian Oceans are India achi so we have to take this strategic advantage of our country's placement okay is it okay to everyone next बहुत बढ़िया Adichanallur हैला Adichanallur कौन एटा हैला आदि देखियो तमे Adichanallur जदि देखियो दिस इज इन तमिलनाडु प्रथम सुनो एठी Adichanallur जदि हमें देखिबा कि दिस वाज इन आल्सो न्यूज ऑफ अगेन दिस सुप्रीम मद्रास हाई कोर्ट हैज गिवन एन वर्डिक्ट अबाउट दिस Adichanallur this is located in near the Tuticorin is an state where the Tuticorin तमे देखिथबो कि वेदांता स्टरलाइट कॉपर माइंस जो इंसिडेंट हेतला तापरु Tuticorin बहुत फेमस हेतला ओके बिकॉज़ ऑफ डिसमेंटल ऑफ दिस प्लांट जोटा कि जदि हमें देखबा कि दिस इज वेदांता हला अनिल अग्रवाल तंकर प्लांट को डिसमेंटल करते तापरु Tuticorin प्लांट आउ बंद हेतला माने आई मीन 2018 some around 2018 19 around अच्छा तारी पाखरे हेले Adichanallur तमे कोन दुखछो किछिटा एठी माटी खोळाय कि किछि पटेरी अछि कोन एठी हिची चलो जानिबा बेसिकली Adichanallur जदि देखबा द मद्रास हाई कोर्ट okay the Madras High Court माने पूरी तमिलनाडु रे has banned the sand mining again has banned the sand mining in around Adichanallur in Tamil Nadu hela Adichanallur in Tamil Nadu Madras High Court has banned this Adichanallur Tamil Nadu one of the India's most significant iron age archaeological site so this Adichanallur the place is in Tamil Nadu near to Tuticorin has a trace back linked with your iron age means जदि हमें देखबा कोठी particularly जदि हम देखा around 5000 or 6000 years back कौन हिलदेला Adichanallur one of the India's most significant of iron age archaeological site Adichanallur जदि देखो is one of the India's largest and most important age iron age megalithic urine orbile sites कौन हैला megalithic or burial sites एटी मिलुची megalithic or माने utensils बहुत सारा मिलुची हैला archaeological connection कौन देखिबा आउरी situated to the banks of the Thamira-Barani river मन रखो एटा भी परीक्षा रे पचारि होतबे this is the question okay Thamira-Barani river that is in Thoothukudi district of Tamil Nadu who river पाखरे Adichanallur this is in the Thamira-Barani river that is located in the Tamil Nadu this is a small river that is flowing in the near to Thoothukudi district Thoothukudi is a district and this Adichanallur is in that district where it is located near to the your Thamira-Barani river ता माने हमें कौन जानले कि Thamira-Barani river Kudore, this particular city, ancient city, 5000 or 6000 years back during the Iron Age time, it has flourished near the banks of this
this Thamirabarani river in Tamil Nadu. Make a note of this, please. Next, the excavation done by the archaeological survey. The excavation done by the archaeological survey of India. The site has yielded extensive burials. Extensive burials of burials containing pottery. Pottery. Pottery, iron tools, bronze vessels, gold ornaments, beads and human skeleton. ये जो तुम देखियो एटी entirely बहुत सारा जिनस इथु बाहर थिला. Okay, ornaments, birds खाली. So government is not interested about the ornaments and other potteries. It is all about the linkage. What is the past? कुछ तो इधर है. So that is what the job of the archaeological department, and that is why the Madras High Court has interfered to stop this sand mining activities. Also, the site is closely matches your description of Sangam literature that provides strong archaeological evidence of the yearly Tamil culture tradition. तामने देखो जब हमें संगम literature देखो Tamil culture रे गोटे बहुत बड़ा part Tamil culture right संगम literature. So that is what जब Adichanallur देखो कौन हमें जानले हम तो तीनटा जिनस प्रथम जिनस वाला कि it is associated with the ancient part Iron Age रा जोटा कि strong evidence with the archaeology. It's a cultural part. So cultural part जब देखो again literature part रे it is संगम literature traced back to the back of 5 to 6,000 years back. So that is what the judiciary has protected, not only the cultural heritage but also the very essence of cultural essence of Tamil culture. So that is what the जब हमें देखो कि तमिल कल्चर एसेंस सांगु को प्लस हमरा जो नेशनल हेरिटेज पार्ट आज जब हमें कल्चर देखो 5 to 6,000 years back, that is what the judiciary has interfered, and particularly the Madras High Court. Madras High Court is one of the very old judiciary. People has believed is one of the very famous. Bombay High Court बढ़िया, Madras High Court is also very famous. Okay, lastly हमें देखिए, hope it is clear to everyone. Okay, last देखिए, this is also important. Last time देखिए, this is कौन देखिए, Jambuguda and Ratnamahal Wildlife Sanctuary. Now the question is that where it is, Jambuguda and Ratnamahal Sanctuary. जब हमें देखें मैप पूरा में देखिए पर this Jambuguda and Ratnamahal Sanctuary is located in Indian state of Gujarat. कोडी अछि Indian state of Gujarat रे. कौन हितला वर्तमान Gujarat is said to regain its tag. वर्तमान कौन करछि Gujarat state is said to regain its tag. Gujarat claim कला कौन as a tiger bearing state. मन रखो Gujarat claiming tiger status. The state Gujarat is claiming tiger status. So Gujarat is claiming tiger bearing state following the sustained presence of Royal Bengal tiger in the Jambuguda and Ratnamahal forest ranges. Jambuguda and Ratnamahal forest ranges मन रखो, these are also the wildlife sanctuaries. Please make a note. जदि तुमर क्वेश्चंस केतला पचारे कि Jambuguda and Ratnamahal wildlife sanctuary कोठी अछि, then your answer should be it is in Gujarat, right? It is in Gujarat. So marking a significant milestone in India's wildlife conservation history. India's wildlife conservation history, they are got Jambuguda and Ratnamahal. Now further Gujarat claims, Gujarat रे एमती कौन पे claim कला कहीं किसी government of India को ask कला कि मते special status दिया जाओ regarding the tiger. ता पचरे भी very valid reason अछि. Let us know. Gujarat claims to be the only state, Gujarat claim कला in India to host the three major variety of cats. Gujarat the state government of Gujarat, it's a very valid point that he stated that I am the only state where having three major variety of cats. कौन? That is your Asiatic lions, then Royal Bengal tiger and leopards. Three variety: leopards, Royal Bengal tigers and Asiatic lions. Gujarat claim kala. Of course, जदि तमे Asiatic lions देखो, now the question is that where is Asiatic lions अछि? Asiatic lions is in Gir ranges, Gir forest. Gir forest जोटा गुजरात रे अछि कोठी काठियावाड़ा रे. This located is in काठियावाड़ा. मन रखो काठियावाड़ा रे हला सेही जगह रे अछि तमर Asiatic lions. And वर्तमान देखले Royal Bengal tiger और leopards कोठी रहले Ratnamahal wildlife sanctuary and your Jambuguda. ठीक अछि, Ratnamahal and Jambuguda. Right? Further, the tigers generally कौन हुए? Tigers are migrated 60 km from Kathiawada wildlife sanctuary. Samane migrate करछन Kathiawada wildlife sanctuary कोठु हला sanctuary in Madhya Pradesh to your
to Kanjeta ranges and Jambuguda wildlife sanctuary से माने मध्य प्रदेश रो माने से जो ट्राई जंक्शन टा सेटा से माने कोन करछन मध्य प्रदेश रो से माने पळे आछन को पार्ट ए गुजरात रो ए पार्ट को तमे एडी देखो दिस इज लोकेटेड जदि हमें देखिबा राइट दिस पार्ट रे दिस इज योर रत्नमहल ए पार्ट टा तमरा मध्य प्रदेश ए पार्ट रे छ तमरा मध्य प्रदेश राइट ए पार्ट जदि हम देखिबा दिस इज योर मध्य प्रदेश तो से माने पळे आछन कोठी मध्य प्रदेश को माइग्रेट करी आछन ए वाला this this tigers mane right tigers and leopards both so about jodi jambuguda upare dekhiba jambuguda wildlife sanctuary it is a biodiversity hub characterized by dry southern tropical deciduous forest hela southern tropical and dry deciduous and secondary forest basically intercepted with grassland and the medicinal herbs so ame jani lete jo Jambuguda is basically it is a tropical deciduous forest city and that is what जदि हमें देखिबा कि एई कारण जो गुजरात रे एशियाटिक लाइन अछि मन रखो एशियाटिक लाइन ता केवल गुजरात रे देखा होछि ओटी गिर रे ससन गिर रे आउ एठी तम देखला कि रत्नमहल सो दैट इज व्हाट बर्तमान हमें एटा कहि परिबा कि जदि हम केतले इंटरव्यू रे पचरा हुए कि गुजरात डज इट करेक्ट दैट गुजरात इज क्लेमिंग टू बी एन टू गेट द टाइगर बियरिंग स्टेट absolutely yes because it measures 3 variety आउ कोनोसी स्टेट रे इंडिया रे देखाओ ना एशियाटिक लाइन्स जोटा कि पर्टिकुलर जोटा कि गुजरात रे से माने तांकर घर सेटा कोठी गिर फॉरेस्ट एरिया गिर फॉरेस्ट कोठी काठियावाड़ा राइट सो वी गेट टू नो दैट रॉयल बंगाल टाइगर लेपर्ड and asiatic lions these all 3 varieties are found in Gujarat and hence Gujarat is claiming to be a tiger bearing state status and of course it is valid okay ठीक अछि ताले so आज पाई मु एतिक रखुची ओके सो अगेन फॉर्मल जोटा कि अनाउंसमेंट मु करे दिस इज द ज्योग्राफी ऑप्शनल बैचेस इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट मोर देन 5 years city both UPSC OPSC online offline data thank one can avail also the test series is going on those who are interested they can ping me and the GS batch is also going on right so thank you so much everyone thank you all for your cooperations again जदि हमें देखिबा कि एई बढिया क्वेश्चंस जो हमें पढिले आजी हला जहाँ भी तुम पढ़िल आज आम पढ़िले कि जहाँ भी तुम जोजिला पास हो कि पर्टिकुलरली है ना ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या ऊपर जदि तुम देखिबो कि भलो भाबे नोट बनेबो तापर घरे जाई आउ थरे ताको पढ़िबो डेफिनेटली दिस सेशंस आर रियली इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हला मन दे कि पढ़ो रिवाइज करो एंड डेफिनेटली करंट अफेयर्स जहाँ भी जतले पढ़ुछो तुम भाबो कि मु प्रीलिम्स छड़ा भी केमती को यूज करि परिबे कंटेंट गुडा को मेंस रे आल्सो इन द इंटरव्यू डेफिनेटली इट इज एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर होलिस्टिक डेवलपमेंट इन योर सिप फॉर द योर सिविल सर्विस एग्जाम्स आल्सो राइट ओवरऑल जदि देखियो सो थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन वी विल मीट अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू okay thank you all of you for your patience to stay with me again we'll meet with your interesting topic again okay thank you so much have a good day thank you so much thank you everyone thank you so much